हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर के आया हूँ एक पोलर कंपनी का फ़ैन है। ये पोलर कंपनी का जो फ़ैन है फ्रेंड्स, इसमें कुछ प्रॉब्लम अलग ही आ चुकी है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है जिसके कारण ये फ़ैन जो है बिल्कुल ही स्लो हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.
I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. इसमें करीब मैं मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 200 के आसपास बता रही है। बट जब मैं इस सीलिंग फैन का जो रनिंग का जो मैं चेक कर रहा हूँ जो ये करीब 350 के आसपास बता रही है। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है। अगर 350 के आसपास आने का मतलब है कि आपको इसमें कम से कम तो 300 वोल्ट AC वोल्ट पर ही ये फैन सही से वर्क करेगी। ये हो चुका है। और जब ये न्यू था तो इस तरह का प्रॉब्लम इसमें नहीं था, जो नॉर्मल फैन में होता है वही था। तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे इसका अगर कैपेसिटर अगर ख़राब हो चुका है या फिर बैरिंग ख़राब हो चुका है, ऐसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो यही हुआ है इस फैन में। इस फैन में हुआ है क्या फ्रेंड्स, पहले तो इसका कैपेसिटर ख़राब था। तो इसमें कोई भी आप सीलिंग फैन उठा करके देखें तो 2.25 mmFD का कैपेसिटर लगी हुई होती है। बट इसमें जो कैपेसिटर पहले लगी हुई थी उसको मैंने चेंज किया था। तो यहाँ पर 2.50 का कैपेसिटर का मैं यूज किया। तो ये फैन चलने के बाद काफ़ी दिन बाद इसका बैरिंग जो है, जो 6201 नीचे होती है और वो 6202 जो होती है वो ऊपर होती है। ये दोनों बैरिंग जो आप देख रहे हैं ये दोनों ही ख़राब हो चुकी है। ये दोनों बैरिंग को मैं चेंज किया। इसके बाद इसका जो कॉइल है उसे देख सकते हैं कि ये इस तरह से हो चुका है कि इसका स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी ही ब्लैक हो चुका है, यानी कि वो हीट ज़्यादा हुआ। ये प्रॉब्लम होने का कारण क्या है फ्रेंड्स, इसका बैरिंग का जाम होना। बैरिंग जाम होने के बाद
कॉइल पर ज़्यादा लोड होती है, जिसके कारण फ़ैन जो है वो आपका स्लो चलती है। और इसी तरह से स्लो होने के कारण कॉइल ज़्यादा हीट होगी। हीट होने के क्या होता है कि इसका वार्निश जो है वो ख़त्म होती है उसकी ले, और इसमें जो पीवीसी पेपर लगी हुई होती है वो जल जाती है, जिसके कारण कॉइल भी लूज हो गई। 350 के आसपास जो आ चुकी थी ये बढ़ चुकी थी। तो ऐसे में क्या करना होगा कि आपको कॉइल को ही हटा देना होगा। अगर इस तरह से आप रखेंगे तो सीलिंग फैन में अगर मैं वार्निश दे करके, बैरिंग चेंज करके, या फिर इसमें कैपेसिटर भी अगर मैं चेंज करता तो भी ये प्रॉब्लम आगे जा करके आ जाती। हल्की सी स्पीड इसकी बढ़ती, बट उस तरह न्यू फैन की तरह ये वर्क नहीं करता। तो ऐसे में मैं क्या किया, इसके कॉइल को ही हटा दिया और मैं यहाँ पर न्यू वाइंडिंग करूँगा। और न्यू वाइंडिंग जो मैं किया, ये करने के बाद ये सीलिंग फैन बिल्कुल सही से और न्यू फैन की तरह वर्क करने लगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने जो भी सीलिंग फैन अगर ख़राब होती है, स्पीड उसकी अगर कम हो जाती है, तो ये उपाय आप कर दें, आपका सीलिंग फैन न्यू सीलिंग फैन की तरह वर्क करने लगेगी। लेकिन ये पोलर का जो फैन है इसमें इस तरह का प्रॉब्लम देखा गया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लेकर के आऊँगा। वीडियो देखने के लिए